Hello, Pravesh. How are you? Hi, sir. I'm fine, sir. How are you? I'm good, thank you. So, what do you wanted to ask? So today I want to ask about a concept called intergenerational equity and intra-generational equity. Intergenerational equity and intra-generational equity. तो देखिए, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ और कंप्लीटली थ्योरेटिकल नहीं, देन दिस इज अ इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट. दिस इज एन अप्लाइड कॉन्सेप्ट. दिस इज नॉट अ प्राइमरी कॉन्सेप्ट. इंटरजनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जनरेशनल Okay. इक्विटी में सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, बेसिकली सारा का सारा ह्यूमन एस्पेक्ट है इसमें. ह्यूमन भी गलत वर्ड बोल रहा हूं मैं. एंथ्रोपोसीन एस्पेक्ट है इसके अंदर. एंथ्रोपोजेनिक जो हमारी टेंडेंसीज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है. या हमारी जो मतलब खुद का एक है कि भाई हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, व्हाट वी एक्चुअली डू, what we do to the environment, what we do to our society, what we do to our nature, what we do to ourselves, वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी से जुड़ जाता है. इंटरजेनरेशनल मीन्स देयर इज अ जनरेशन विच इज बिफोर यू, मे बी 3 generations before you, 2 generations before you, and there is a generation which is coming after you also. So इक्विटी मिलनी चाहिए उनको. यानी कि बात यह है कि जिस पॉजिटिव माहौल में, जिस पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मिली हैं, या आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, या आपको सोसाइटल वैल्यूज मिले हैं, या आपको खाना पीना और रोटी कपड़ा मकान स्कूल मिला है, तो आपका फर्ज है हर हाल में उससे अच्छे कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है फ्यूचर में छोड़ के जाना पड़ेगा. ये इक्विटी की बात है उसमें. ये एक अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट भी है, अप्लाइड इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट भी है. जैसे क्या आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हो जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जहां आप कहोगे कि इंटर जनरेशनल इक्विटी को ये चीज बड़ी हार्म कर रही है प्रेजेंट टाइम पे, और एक ऐसी चीज बताओ जो उसको सपोर्ट कर रही है. बताओ एक एग्जांपल. गिव मी एन सर, एग्जांपल. हार्म तो क्लाइमेट चेंज कर रहा क्लाइमेट चेंज तो देखो है ही, वो तो एक लंबा बात हो गई, वो तो प्राइमरी पार्ट हो गया, दैट इज द प्राइमरी थिंग. बट ऐसी चीज बताओ विच इज हैपनिंग एंड विच कैन बी स्टॉप्ड. Climate change can है। also सर be stopped, but then you need multiple stakeholding in that. Hmm. जी सर. सर, आई वुड गिव द एग्जांपल कि क्या चीज क्या आ रही है. दैट इज अ डीजेनरेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम. That is, डीजेनरेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम. okay, degeneration of our value system. Hmm. वो भी आपने देखो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है ना. उसकी जगह जी. आप ले सकते थे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. जैसे मैं कहूंगा रशिया यूक्रेन वॉर इज एन एग्जांपल which is जी. very very harmful and dangerous for intergenerational equity. Export of terrorism by Pakistan is an example of intergenerational equity in a negative sense. Steps taken up by India and like-minded countries in order to promote green energy is a step towards intergenerational equity. What India is contributing in Africa in terms of even trilateral highway along with Japan, which is planning that we should do something like that, or what contribution India is doing in terms of even on combating piracy, वो भी आप इंटर जनरेशनल इक्विटी से जोड़ सकते हो, और उसको इंट्रा जनरेशनल से भी जोड़ सकते हो. क्योंकि within the same generation, intra-generational equity, is there when there is good rule of law, when there is equality among all, when there is, आपको एक व्हाट्सएप से ही आपके काम हो रहे हैं, और एफिशिएंसी है, और साथ में आप समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिस्पॉन्सिव हो, तो वो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी हो जाएगी. जी क्योंकि सर. आप अमेजन फॉरेस्ट सब जगह क्रिएट नहीं कर सकते भाई. अभी ग्रीनलैंड में 1995 में वट एवर वाज द टेम्परेचर, 1.5 degree raise has been there since last, you can say, 200 years or 400, whatever it is. There is a research happened that I am not exactly saying that कि मुझे exactly पता है. But then वो ऐसा हुआ क्यों? जो ice cores when they were drilled, the deep inside it was found that actually human activities have contributed to the change in the temperature even in the interiors of in the northernmost part of the Greenland also. तो वो इंटरजनरेशनल इक्विटी के लिए एक घातक है. एंड देन ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. If you are using जी सर. public transport, if you are not obsessive with your own vehicle, if you are not obsessive with your own polyester clothes, if you are not obsessive with the bullet or high end gadget car और बाइक जिसमें से डट 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 करके साउंड निकल रही है,
तो शायद आप उस इक्विटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मेरी बिल्डिंग बनेगी 6 मंजिल 5 मंजिल, मेरे को 5 फ्लैट चाहिए ही चाहिए, चाहे उसमें कुछ अल्ट्रा लग्जरी चीज लगा के आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, तो आप शायद इक्विटी को प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो ऐसा करके आप सोच सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स। जी बताइए और। सर, इसमें सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या हम इक्विटी को, एज वी हैव जस्ट टॉक, इक्विटी को हम इकोनॉमिक्स एंगल में ज्यादा नहीं लेना चाहिए था कि जैसे कि अ, बिल्कुल ले सकते हैं आप इकोनॉमिक एंगल में। आप इकोनॉमिक की बात करोगे तो वहां लिया जाएगा तो, लेकिन उसके अंदर फिर आप हर चीज को ग्रीन जीडीपी में कैसे क्वांटिफाई करोगे? ग्रीन जीडीपी जी आया तो ग्रीन वॉशिंग भी आ गया। ग्रीन वॉशिंग इज जी नेगेटिव एंड ग्रीन जीडीपी इज पॉजिटिव। तो लेना पड़ेगा आपको, वो ले लोगे आप। आई हैव गिवन यू एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। So, in economic terms, intergenerational equity means that you must consume as much as which is sustainable and not what you can consume. जी So, if you are creating a demand for something which is artificial or maybe जी fast food a lot, then actually you are doing a negative thing, because primary simple goods prices may be raising because of that. It is all demand and supply. For सर, example, कैन आई सी gawar ki fali. When gawar ki जी fali, guar, guar beans, क्लस्टर बीन्स जिसको कहते हैं, व्हेन दे वर यूज्ड फॉर शेलिंग, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन में इसका रोल है बहुत ज्यादा, देन सडनली द प्राइस इंक्रीज्ड ऑफ दैट स्टफ। अदरवाइज इट इज वन ऑफ द मोस्ट गुड फूड, गुड फूड फॉर हेल्थ, फॉर बॉडी। तो जो जो प्राइमरी फार्मर है, देन इट मस्ट गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। और कुछ बोलना जी है? यस सर, वन मोर थिंग कि फॉर एन एग्जांपल द गवर्नमेंट आर imposing more tax on the people, and ये that would भाषा be ही गलत है, ये भाषा ही गलत है। गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग मोर टैक्स ऑन द पीपल। फिडल कास्ट्रो है क्या यहाँ पे? या मतलब फिडल कास्ट्रो तो क्या गलत एग्जाम्पल है? यहाँ डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है, लेबनन थोड़ी ना है हम। आपकी भाषा गलत है, so ऐसे sir, नहीं I बोल can say सकते आप। demand. जी डिमांड क्या? tax. भाई टैक्स तो चाहिए ना, अदरवाइज हाउ रेवेन्यू विल बी जनरेटेड? बट देन इट इज No सस्टेनेबल, इट sir, शुड बी सस्टेनेबल नेचर। my point is not that the tax should be or should not be. What I really want to convey is that the tax which the present generations are paying, so that their link with the future coming generations, can we link it into the डेफिनेटली यू equity कैन लिंक, point or not? डेफिनेटली you can link that also. If you are paying your taxes on time जी and it is helping in creation of national highways, if it is in creation of building of national parliament, if it is helping in the creation of a digital India, if it is helping in creation of a fiber optical network, then definitely you are contributing for the future. You can definitely ओके think like सर. that. You can definitely. जी और कुछ नो सर, थैंक यू. नहीं तो ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ देर इज एनी इशू प्लीज लेट मी नो। नो सर, इट सो इज डन फाइन. हाउ डू यू रेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग? क्या समझ में आया, मतलब क्या बोलेंगे हम? So, as far as the numbers are concerned, I'll rate myself 8. हम्म। And the learning, what I've understood is how to think about a topic in different aspects. ठीक है बॉस, डू वेल, कीप पुटिंग बेस्ट एफर्ट्स, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एंड देयर इज नो शॉर्टकट, ओनली द राइट वे Thank you, विल sir. गेट सक्सेस। टेक केयर, थैंक यू। Thank you.